Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. Yeah, today is a very interesting subject. India का strategic autonomy. ये term we've heard it too many times. हर जगह ये term बोली जाती है कि भाई India has something called strategic autonomy. उसके हिसाब से हम अपनी foreign policy के गोल सेट करते हैं, उससे हिसाब से हमारी इंटरैक्शंस होती हैं. सो आज का पॉडकास्ट ब्रिगेडियर साहब के लिए इज द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन डेव टॉक्स. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून, वेलकम to Dev Talks for your first podcast. You've all been here and you've advised and you've helped us learn before through videos, and I hope you enjoy this as much as I enjoy talking to you, sir. Thank you very much, sir. Yes, I'm looking forward to this podcast and more importantly, interacting with your audience. Please to learn and to convey. Mostly to learn and then to convey. अरे सर, थैंक यू सो मच. सर, मैं एक ही चीज पूछूंगा सर राइट एट द बिगिनिंग. ये है क्या चीज है? व्हाट इज दिस बला? विल गेट इनटू योर प्रेजेंटेशन आल्सो. आई नो यू गॉट सम स्लाइड्स फॉर अस. इन सिंपल वर्ड्स सर, ये भला क्या है? आई मीन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मींस सेल्फ रूल. स्ट्रेटेजिक इज लॉन्ग थिंकिंग. नो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू, आप भारत का, हिंदुस्तान का क्या प्लान है इस पॉलिसी को फॉलो करने के टाइम पे? देखिए, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का इन शॉर्ट मतलब इज बेसिकली इज दिस दैट यू हैव द फ्रीडम ऑफ चूजिंग योर ओन पॉलिसी डायरेक्शंस एंड फॉर्मुलेटिंग योर ओन पॉलिसी ऑप्शंस. वो आप अपनी पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, वो अपने अपने तरीके से बनाओगे और अपने इंटरेस्ट के लिए बनाओगे. परंतु प्रॉब्लम ये है कि वी लिव इन अ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड. पहले वी टू टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का था मतलब उसका फायदा भी था क्योंकि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड था. एक जगह से आप कनेक्ट हो, आप वहाँ से सामान खरीद सकते हो, इधर आ सकता है. पहले आप जब हम अभी आप लोग तो जो आपकी जो यंगर ऑडियंस है उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, परंतु पीपल लाइक मी, व्हेन वी वर यंग वी कुड नॉट इंपोर्ट एनीथिंग इनटू इंडिया, वी कुड नॉट बाय एनीथिंग. वो हमें लाना पड़ता था तो उधर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी. और एक वीडियो रिकॉर्डर ले आते थे तो कस्टम वाले कहते थे जी 15,000 ड्यूटी दो, ये करो, एटसेट्रा एटसेट्रा. और उसके बाद अगर हमने हमारे जो है इन दी diplomatic domain, we were looking at a small South Asian power, impoverished country, जिसका पास अपने देशवासियों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है. और जो है हमारी जो है इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी वो PL 480 से नीचे हो गई. उसके बाद 1991 में हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया और उसके बाद से जब हमने अपना राइज शुरू किया है. सो इंडिया जब कहता है कि मैं अपना जो है अपना रास्ता खुद चुनूंगा, अपना अपना जो है अपना जो भविष्य है खुद बनाऊंगा, तो वो उसका दारोमदार क्यों है? कैसे कैसे इंडिया कह सकता है? और ये जो इस चीज का मतलब होता है मैं अपना खुद रास्ता खुद अपना भविष्य बनाना. उसका मतलब बेसिकली इज दिस कि भाई मेरे में वो क्या है कि वो क्या इन्वायरमेंट है जो मेरे को अलाउ कर रही है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है मैं अपना अपना भविष्य अपना जो है डायरेक्शन अपने आप तय करूं. तो इसका जो है इसके बारे में आज हम बात करेंगे. मैं दो भाग में इसके बारे में बात करूंगा. जो पहला भाग है, इन फर्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एंड हाउ इजी इट इज टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज. वर्ड कहने से और प्राइम मिनिस्टर या किसी हमारे लीडर्स के कहने से कि साहब आई इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस कंट्री, वी विल मेक ओन डिसीजंस, वी आर, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप एक घर में भी रहते हो देर आर डिफरेंट पुल्स एंड प्रेशर्स सबके पास होते हैं. And in any societal environment, there are pulls and pressures. You have to live by certain norms. There is a rule-based order. They have to believe in certain norms. There are some pressures, etc. So, what are the kind of pressure and norms that you are going to facing? So, in the first part, we will just have a little academic discussion. हम उसको इस चीज के बारे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे. और दूसरे भाग में मेरे में चंद एक आपको एक स्लाइड्स के जरिए मैं आपको बताऊं कि कैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट है और उस ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंडिया का क्या रोल है
और उस रोल के उसके उस एनवायरनमेंट के अंदर इंडिया अपना जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को है वो कैसे एक्सरसाइज कर रहा है। हम मुद्दा ये है कि हम कहते हैं हम वी आर अ स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस पावर, बट हाउ आर वी एक्सरसाइजिंग दैट पावर, हम उसको कैसे हम उसको लेवरेज कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो ये दो हिस्सों की वाली बात है। तो कैन आई गेट टू द फर्स्ट स्लाइड प्लीज? हाँ जी, एब्सोल्युटली सर, हियर वी गो। So this is what we're going to be discussing, India and the strategic autonomy. First slide, please. Now, strategic autonomy क्या चीज है? In pure form, strategic autonomy एक सपोज कर लेती है कि एक स्टेट के पास ओवरवेलमिंग पावर है। पावर का जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो 3 डायमेंशनल पावर करती है। उसका होता है इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल। ओके, सो इन तीनों का हम जो है वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको पावर बोलते हैं। तो वो उसके पास इतनी इंट्रिंसिक पावर है कि वो जो है कि हर एक वो इंटरनेशनल प्रेशर जो उसके ऊपर डालना चाहता है उसको वो रेजिस्ट कर सकता है। तो अगर हम इस मुद्दे से देखें तो ओनली एक अमेरिका ही है जो ये सुपर पावर है इन सो कॉल्ड यूनिपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर, वो इस पावर को पोजेस कर सकता है। परंतु उसके अंदर जो है, हालांकि वो चाहता है कि ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल पावर को जो अप्लाई करे टू एनहांस हिज ओन इंटरेस्ट। अगर आपने इसका एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो अभी जो हो रहा है यूक्रेन लड़ाई, अगर देखा जाए फ्रॉम फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो द व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप is an state in Europe called Ukraine is being driven to fight the Russians by United States, which is not located in Europe, but it is an offshore power operating through an alliance system called NATO. NATO जो है वो एक अमेरिका ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री अलायंस सिस्टम है, और वो ये लड़ाई लड़ रहा है। और लड़ाई किस लिए लड़ रहा है? तो इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली अंडरमाइन रशिया। और इसकी एक हिस्ट्री है, उसके अंदर मैं टाइम नहीं है जाने के लिए, परंतु बेसिकली ये है कि रशिया जो है और वेस्ट की बड़े सालों से लड़ाई है। कोल्ड वॉर थी, कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन से रशिया बन गया, तो उनकी एक एक लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमोसिटी है। एंड इस यूक्रेन का फायदा उठा के जो है एक यूनिपोलर पावर जो है अमेरिका, यूजिंग हिज allies and supporters, is to overwhelm Russia both economically and militarily. तो ये अगर आप इस मुद्दे से देखें, ये अगर आप चाइना का देखें, अब चाइना अगर का जो एशिया का रोल देखें, जो जिसको हम कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस, भारत के साथ करना, और साउथ चाइना सी में अपना धाक जमाना, ये जो सारे चाइनीज एक्शंस हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ चाइनीज बिलीफ दैट it's a strategically autonomous power in Asia, but but as I have said in the last bullet, third bullet जो है अगर आप देखें कि you might be having a huge amount of economic, military and technological power, but you are not without pressures. आपको प्रेशर जो है वो आपको जो है वो आपके ऊपर आते एग्जर्ट रहते हैं होंगे और आपको वो झेलने पड़ेंगे। जी। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कि जब एक आप इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि एक पानी के अंदर एक आप पत्थर फेंकते हो। जब आप पत्थर फेंकते हो तो उसके साथ आप देखते हो सर्कल बनते हैं, उसके पत्थर जितनी जोर से फेंकोगे उसके इसके धारे धारे बनते रहते हैं, सर्कल बनते रहते हैं। और जब तक वो एक कोई और चट्टान या और कोई वीड्स के साथ नहीं जाके लगता, तो वो जो है वहां तक वो उसके वो दायरे चलते रहते हैं।
It concentric circles of the stone which you throw in water are exerted through that. But moment it feels resistance, a counter resistance starts coming in. So the problem is that when you take actions, be it economic, political, or any other, there will be a counter reaction to your action. That the counter reaction to that action is is a डायनामिक रिएक्शन. वो जैसे हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर क्या हुआ है. लड़ाई शुरू करी, उन्होंने तकरीबन $100 बिलियन के आर्म्स इक्विपमेंट दे दिए, लड़ाई वहां चल रही है. परंतु जो है कि एक नया ग्रुप दुनिया में उभर के आ रहा है, जिसको हम लार्जली कह रहे हैं एक ग्लोबल साउथ, or those powers who are not interested in the European conflict, but they are more interested in ensuring that their economy, their trade, their supply of essential commodities like oil, rice, uh, uh, etc., are not restrained by this small action between two small countries, a small country like Ukraine and Russia, जिसका impact globally नहीं होना चाहिए. ये आपकी लड़ाई है, आप लड़िए, परंतु हम इसके अंदर हिस्सा नहीं ले. यही कारण है कि एक sort of a blowback, there is a blowback effect against Russia, sorry, against United States and West that is emerging globally. इसके अंदर 75 कंट्रीज ने तो ओपनली कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, एंड बैलेंस आर न्यूट्रल. देयर आर ओनली अबाउट 34 कंट्रीज which are by and large western powers or western power associated countries which are supporting the war in Ukraine, but balance of the countries are not. So balance of the countries are worried about the consequences of the war, the unilateral sanctions that have been imposed on this thing, the impact on trade. So this is what is so the important point ये याद रखना है कि even if you are a strategically autonomous power, you have enormous capacities and capabilities. You are still will have pressure on you, and that pressure you will have to constrain. The degree of that pressure can be increasing or decreasing depending on how the power play is played. So it's a question of power play that takes place. Next slide, please. So how does this strategic autonomy का ये जो मुद्दा है, एक भारत जो एक रीजनल पावर है, उसको वो कैसे अप्लाई करता है? भारत का जो मुद्दा है वो इस तरह से अप्लाई करता है कि व्हाट इज इंडियाज ability to resist external pressures and practice autonomy, वो उसका दारोमदार जो है, उसका पूरा जो उसका जो डिपेंडेबिलिटी है वो इसके ऊपर है कि क्या ग्लोबल स्ट्रक्चर क्या है और इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है, रीजनल ऑर्डर क्या है, और भारत की वहां पे जाके क्या स्टैंडिंग है. इन पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया जो है ये जो रीजनल एंड ग्लोबल प्रेशर्स को मैनेज कर रहा है टू एक्सरसाइज इज इंडिपेंडेंस इन चॉइस ऑफ पॉलिसी मेकिंग. Strategic autonomy is basically independence of choice in policy making. अभी हमने यूनिपोलर की बात कर रहे थे, उसके बाद दुनिया ये भी कहा जाता है जी दुनिया यूनिपोलर नहीं है, अमेरिका की जो है पावर इज ऑन द वेन, और अभी हम एक बाइपोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं. What is the meaning of bipolar world? Bipolar world basically means that there are two poles. One is the America, which is an established global power, and there is an emerging power called China, और जिसको कई बारी G2 का नाम भी दिया जाता है. सो ऑल द ग्लोबल 2 वो है. और मल्टीपोलैरिटी के अंदर जो हम देखते हैं तो दुनिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर उभरती हुई पावर्स को हम लेते हैं. उसके अंदर रशिया का नाम आगे है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद इंडोनेशिया है, उसके बाद ब्राजील है, और किसका भी कई हद तक
एक साउथ अफ्रीका भी एक उभरती हुई पावर है, बट इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड वेयर यू माइट एक्सरसाइज, एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर ऐसे है कि मल्टीपोलैरिटी अगर हम बात करें, देयर यू कैन हैव रीजनल मल्टीपोलैरिटी बट ग्लोबल यूनिपोलैरिटी, or you Hmm. can have multipolarity in regional choices, but in global financial system, for example, आज के तरीके के अंदर देर इज अ यूनिपोलैरिटी, जिसको अभी हमने ब्रिक्स में देखा कि कैसे हम वो है एक नई दिशा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम डी डॉलराइजेशन कह रहे हैं, और जो है बायलैटरल ट्रेड को हम बढ़ावा दे रहे हैं आपस में, कि भाई अगर डॉलर तो ग्लोबल करेंसी ठीक है, मगर मैंने और साउथ अफ्रीका ने ट्रेड करनी है, हम क्यों डॉलर्स में करें? मेरे पास जी। आपने 500 बिलियन डॉलर से 50 बिलियन डॉलर की मेरे से ट्रेड करनी है, आप मेरे से सामान लीजिए, मैंने आपसे 45 बिलियन डॉलर का है, मैं 45 बिलियन डॉलर का सामान लूंगा। और एक तरह के ये करेंसीज जो है वो करेंसी बोलते हैं, पर एक तरह की ये बार्टर ट्रेड हो जाती है। सो द क्वेश्चन बेसिकली दिस थिंग इज कि अगर हम बाइपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर देखें, जहाँ पे पावर सेंटर्स बहुत हैं और वो एक दूसरे को रेजिस्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कंट्री है लाइक इंडिया, विच इज अ रीजनल पावर एंड emerging रीजनल पावर, कैन प्ले both sides to its advantage and to gain its own space in the global order. So this is जिसको हम कहते हैं provides room for diplomatic and political maneuvering to satisfy India's interests, economic, political, and other military or security interests. So this is what I say. Uh, so so point ये है कि इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है। लास्ट बुलेट की आप जरा ध्यान दीजिए, इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है। तो इंडिया जो है, इंडिया जब अपने आप को एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एक्सरसाइज करता है और अपना इंडिपेंडेंस पॉलिसी की बात करता है, उसका मुद्दा सिंपल टर्म में ये है, एडवांस इंडिया इंटरेस्ट बाय आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज created by contradictions in the global order. These are the This is what has been specified by our foreign minister in his book. He talks about the fact that India is attempting to advance India's interests by identifying and exploiting opportunities. पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लॉइट करेंगे थ्रू द कॉन्ट्रडिक्शंस इन ग्लोबल ऑर्डर। अभी आप देखिएगा, इसका इसका एक साफ साफ जो है, हम इसके बारे में बात करेंगे, परंतु आपको समझाने के लिए इसका एक सीधा साधा जो है एग्जाम्पल ये है कि यूक्रेन की लड़ाई के अंदर हमने सॉवरेनिटी इशू के ऊपर कहा कि यस, किसी दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी को अटैक करना और उसके 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 ऊपर जो है टू attack somebody's sovereignty is not an acceptable thing in the rule based order. Countries are, it is against the UN charter. परंतु हमने ये नहीं कहा कि रशिया गलत है या यूक्रेन गलत है। हमने कहा कि both sides should sit down together and sort the problem. Second, we said that we need energy. हमारे को एनर्जी चाहिए, हमारे को फर्टिलाइजर चाहिए, हमारे को रशिया से स्पेस चाहिए। वी विल गेट दोज स्पेस। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि वी फील दैट देयर इज अ चैलेंज ऑफ चाइना इंक्रीजिंग इन एशिया, इंडो पैसिफिक, एंड फॉर अस strategic partnership with the United States is a very important key element of that. So we will have a strategic partnership with United States. And in building up the strategic partnership and building up India's Autonomy programs, particularly in defense,
and in other strategic sectors, in emerging technologies. We are willing to do business and collaboration with United States and even in France or other Western powers. So, what the contradictions और जो हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इस लड़ाई की, जैसे कि हमें चीप तेल मिला है, हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे मेरे को 800 बिलियन डॉलर का जो बिल देना पड़ता है, जो भी है, बिल देना पड़ता है एनर्जी इंपोर्ट का। इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। अगर मैं उसको अमोर्टाइज कर सकूं और उसको कम कर सकूं बाय गेटिंग चीप ऑयल, व्हाई शुडंट आई डू इट? सो Why not? इंडिया, this is what is the meaning, that you identify your interests and exploit opportunities and contradictions in the global order. So this इसका मतलब ये है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ अभी मैं आपको बता रहा था इंडिया कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कैसे इसको इसका फायदा उठा रहा है, और ग्लोबल ऑर्डर क्या है उसके बारे में हम थोड़ी अभी बातचीत करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसके अंदर आप देखेंगे, ये मैं स्लाइड में आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्लोबल ऑर्डर कैसे इवॉल्व हो रहा है। हमने ग्लोबल ऑर्डर की पहले शुरू से इस बातचीत में हम बात करते आ रहे हैं। सो अगर हम देखें, हम तो दुनिया को हम तकरीबन 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स या ऑर्डर्स के अंदर हम देख सकते हैं। एक है यूनिपोलर वर्ल्ड, और जिसे जो भी हम यूनिपोलर वर्ल्ड को हम कहते हैं कि इट इज अ यूएस स्ट्रोक वेस्ट। वेस्ट के जब हम कहते हैं यूरोप को कहते हैं, और वेस्ट के अलाइज जो हैं एशिया में, जैसे जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, साउथ कोरिया हुआ, फिलीपींस हुआ, उनको लेके उसको एक कलेक्टिव टर्म दे देते हैं वेस्ट। और उनकी जो है हेजेमनी है, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो डोमिनेंस है, इकोनॉमिक मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक ग्लोबल का हिस्सा वो है। दूसरा उसको जो चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है वो है चाइना, और उसका द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर जो है वो है यूएस चाइना ग्रेट पावर कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। नाउ इसके अंदर आप दीजिए, मैंने तीन वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। अमेरिका और चाइना का कंपटीशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, और कोलैबोरेशन भी है। आपको ये जान के जानना पता होगा, परंतु या जिनको नहीं पता, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यूएस चाइना ट्रेड है 700 बिलियन डॉलर की, और जापान चाइना ट्रेड है 180 बिलियन डॉलर की। जर्मनी की ट्रेड है ओवर 100 बिलियन डॉलर्स विद चाइना। सो at one level, in geopolitical terms, there is a competition between US and China, primarily because the competition of US and China is not for global hegemony. It is उसको बताया जाता है ग्लोबल हेजमनी के लिए, परंतु वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि जो है चाइना यूएस का कंपटीशन है इंडो पैसिफिक में लिए। इंडो पैसिफिक का उसका मतलब कंपटीशन ये है कि चाइना wants to become unipolar power in एशिया। उसका मतलब ये है कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए, और आज की तारीख के अंदर उसका मेजर कॉम्पिटिटर जो है इन एशिया जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, सपोर्टेड बाय इट्स की एलाइज, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया, और उस साथ में अभी भी फिलीपींस भी आ गया है। सो ये है उसका उसका मोटी बात क्या है? मोटी बात उसकी सिर्फ ये है कि अगर चीन, अमेरिका जो नॉन रेजिडेंट पावर है, मैं आपको बता रहा था ऑफशोर पावर नॉन रेजिडेंट पावर है, उसको एशिया से निकाल देता है, तो चाइना का जो है वो राज जो आज की तारीख के अंदर कॉन्टिनेंटल एशिया में है। अगर आप अब एशिया का नक्शा अपने दिमाग में लेके चले, तो एशिया जो है उसके दो हिस्से हैं मोटे मोटे।
एक तो है कॉन्टिनेंटल एशिया, जो भी चाइना है, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया के अंदर सर्टन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, और इधर इधर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, उसके अंदर इंडोनेशिया वगैरह नहीं आता है, अगर हम कॉन्टिनेंटल की बात करें। उसके बाद फिर है इसके अंदर जो हम कहते हैं कि पेनिसुलर एशिया, जो पेनिसुलर कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, एंड देन देर इज मैरीटाइम एशिया। मैरीटाइम एशिया के अंदर ये कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, परंतु हम एक इसका वेस्टर्न पैसिफिक को लेके उसका हिस्सा मानते हुए चलते हैं। जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ। तो अगर हम इन चीजों को देखें, चीन का मोटा जो है पावर एंड इन्फ्लुएंस जो है कॉन्टिनेंटल एशिया में है, आसियान के ऊपर है, और जो है उसके बाद जो है उसकी साउथ चाइना सी के अंदर है। उसके उसके आगे जाके चीन के सामने एक बड़ी पानी की दीवार आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन। ये फर्स्ट आइलैंड चेन जो है, ये अमेरिकन अलाइज की पावर से बनी हुई है। इसके अंदर नॉर्थ में जापान है, नीचे ताइवान आ जाता है, और उसके नीचे फिलीपींस आ जाता है। तो एक तरह का एंगुलर बन जाता है। और ये जो है ये चेन जो है, ये चेन जो है एक दीवार बन के चीन की इन्फ्लुएंस के सामने खड़ी है। तो कंपटीशन अभी ये है कि किस तरह से मिलिटरली इसको हराया जाए। दूसरी बात ये है, चीन जो है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है। नाउ इकोनॉमिक पावर जो है वो ठीक है, उसको वो मानते हैं इकोनॉमिक पावर है, परंतु वो जो कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि वो चीन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, या चीन बैक एंड फैक्ट्री बन गया था ग्लोब का, उसको वो आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना चाहते हैं। जी। और वो आहिस्ता आहिस्ता तोड़ने के जरिए जो है वो उसको शिफ्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारी वियतनाम में जा रही हैं, काफ़ी सारी साउथ ईस्ट एशिया में जा रही हैं, और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है, काफ़ी सारी इंडिया में भी आ रही है। आ रही हैं। अभी आपने देखा कि कैसे $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एप्पल ही कर रहा है इंडिया में। सो दैट इज द बाइपोलर वर्ल्ड। और सो ये कंपटीशन जो है, ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस पावर के लिए चलेगा। नाउ चीन जो है अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर मांगता है। उसने 3 अभी इनिशिएटिव निकाले हैं। एक उसने निकाला है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, civilization, and ग्लोबल पीस, the ग्लोबल डेवलपमेंटल। global development initiative. Sorry. So global security development civilizational initiative. The point उसका सिर्फ ये है कि जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही नहीं है, हमारी एशियन सिविलाइजेशन भी बड़ी स्ट्रांग है। जी। हमारे पास अपना अपना हमारा धर्म है, हमने अपने इस धर्म को अख्तियार किया है। हम पुरानी सिविलाइजेशन है, तो हमने उनके ऊपर नहीं चलना। द रूल बेस्ड ऑर्डर जो वेस्ट कहता है, वो एक सेल्फ सर्विंग सिस्टम को उन्होंने जन्म दिया था पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। परंतु एशिया के अंदर इनहेरेंट जो है एक सिविलाइजेशनल ऑर्डर है, जिसके अंदर डिफरेंस उनके और हमारे में ये है, वो जो वेस्ट है वो इंडिविजुअल को महत्व देता है, इंडिविजुअल की क्षमता को महत्व देता है। इंडिविजुअल इज अ फॉर्म ऑफ 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 डिनोमिनेशन ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये जो कहता है सिविलाइजेशनल कंस्ट्रक्ट जो है, वो कहता है नहीं, वी आर नॉट दैट रिच, आर रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, हमें एक जो है एक कम्युनिटी के लिए काम करना है, हमें अपने देश की सिविलाइजेशन के लिए काम करना है, ना कि इंडिविजुअल के लिए। इसलिए कॉमन गुड इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल गुड। So this is what the whole thing is about. The third power structure is the US, China, Russia. इसको हम ट्राइपोलर भी कह सकते हैं, परंतु इन अ सेंस इट इज बाइपोलर, बिकॉज अभी रशिया जो है जो यूक्रेन की लड़ाई के बाद एक तरह से उसके आपस में वो जो है रशिया चाइना का एक कॉन्डोमोनियम बन रहा है, दितांत हो रहा है, और उसके उसके हिसाब से
जो है इन दोनों को एक ही ब्लॉक में अभी मान के चलते हैं। तो ये जो ब्लॉक है फॉर वेरियस रीजंस, ये ब्लॉक जो है ये एंटी अमेरिका ब्लॉक है। सो नाउ देयर आर टू ब्लॉक्स which we now call the Western Bloc, which is led by United States, and then there is a East Eurasian Bloc, as we call it, because it's mostly continental, and some of it is in the maritime domain. That is by China and Russia, and these two have joined hands together, and the war is going to be now between these two different blocks. Now, अभी आपने देखा ब्रिक्स में जो क्या हुआ, जो ब्रिक्स में अभी जो क्या हुआ, आप बड़ी कमेंट्री करी है, आदि साहब ने भी बड़े वो शो किए हैं, पर एक मोटी इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि अगर आप अपने ब्रिक्स में देखें कि क्या करने की कोशिश की है, कि रशिया एंड चाइना हैव कम टुगेदर टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक एंड रिसोर्स सिस्टम। नाउ जो जो 6 कंट्रीज इनके इंक्लूड करी हैं, उसके अंदर अगर आप देखें 3 कंट्री ऐसी हैं जो एनर्जी मार्केट को कंट्रोल करती हैं। अगर उनको तीनों को लेके आप चलें, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ईरान, और साथ में अगर हम रशिया को लेंगे, दे हैव नाउ हैव द कंट्रोल ओवर द इंटायर एनर्जी मार्केट इन द वर्ल्ड। और आज तक पहले एनर्जी मार्केट थी जो वो वेस्ट कंट्रोल करता था, अमेरिका करती थी। एक दो क्रूड होते थे, एक एशियन क्रूड था, एक ब्रेंट क्रूड। एशियन क्रूड में हमें $1 एक्स्ट्रा देना पड़ता था, क्योंकि जो है हमारे को लॉयड कहता था कि मैं आपसे ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लूंगा $1 एक्स्ट्रा। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। So now what is happening is that the entire energy market is now going to get controlled. Similarly, the footprints of infrastructure development and to support the growth of the global south, particularly in Africa, the money and resources are going to come from these new block of countries. So over a period of time, a new element will develop where world, which was till yesterday dependent on the Western सपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, IMF, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा, पर अभी जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक एंड अदर एलिमेंट्स जो है, और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, वो जो है वो इनको सपोर्ट करेंगे। उसके साथ में है BRI। तो ये एक नया ब्लॉक बनता जा रहा है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ऑफ the two blocks contest which is developing in the world. And third is the middle powers, जिसके बारे में इंडिया जिसके अंदर आता है, which are now becoming an important source of shaping global power, and they have influence and strategic locations and markets. Now, why इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की इकोनॉमी अगर 7% से ग्रोथ करती है, 7% की ग्रोथ के बाद इंडिया का मतलब यह है कि इंडिया की जो मार्केट है एक बहुत बड़ी फैल जाती है। अब फैली हुई मार्केट के अंदर हर एक आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है। सो ड्यू टू शेयर क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, यू आर बिकमिंग अ डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड। द सेम स्टोरी अप्लाइज टू इंडोनेशिया, द सेम स्टोरी अप्लाइज टू the countries in like Saudi Arabia. The same story applies to even Iran once Iran gets out of this contentious sanction regime. So this is what the whole story is all about. So there are now these 4 blocks there. Next one, please. Now इसके अंदर अलाइनमेंट्स क्या हैं? मोटे तौर पे मैं ये इस स्लाइड में आपको बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का एक है ब्लॉक, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया ले लीजिए, इसके अंदर कॉन्टेस्ट है और कंटेनमेंट है। और इस ब्लॉक को जो है लड़ाई करने के लिए जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स एंड उसके अलाइज जिसकी मैंने बात करी थी, और दूसरी तरफ है चाइना एंड रशिया। इंडिया अभी देखिए, इंडिया का पोजीशन, इंडिया इज इंटरेस्टिंगली इन द मिडल ऑफ दिस ब्लॉक। इंडिया इस ब्लॉक के मिडिल में है।
कैसे है? We are a strategic partner of United States. We have a strategic partnership with almost all the US allies. We have a strategic partnership with Russia. We have contestation with China, but we have only a border contestation with China. We are not an enemy of China. India does not look at itself as enemy of China. We still believe that China and India have to live in the same common strategic space, and therefore we need to be have a better relationship. So we seek better relationships, except for the fact that China wants to coerce us into its way of thinking, and we are resisting it. And we are and the whole issue between China and India is this, which I'll come to a little later, is that it's a contest of wills that is now emerging at this stage. Although हमारे हमारे जो हम अपने जहन में अपने आप को वीक समझते हैं, परंतु अगर आप इस स्लाइड को देखें, you are given your strategic partnership with the Western Alliance system, your strategic partnership with Russia. The only player you have a antagonistic partnership with China. 3 out of 4 global players in the world or global systems in the world are with you. So how can you be weak? You are not weak. आपको वीक नहीं हो, आपको ये अपना जो है हम जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, हम जब चाइना के साथ हमारी झड़प होती है तो हम यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका फायदा उठाते हैं, क्वाड्रिलैटरल ज्वाइन कर रखा है, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इसी करके लिए करते हैं. So this is how the new global alignments has come. Now within this global alignments, there are trilaterals in which India operates. Next one, please. This is what I call India US China triangle और इसको बोलते हैं हम इंडो पैसिफिक. इसके अंदर 3 प्रिंसिपल प्लेयर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड इंडिया. जो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसके 4 बड़े मुद्दे हैं जो मैंने इधर दिखा रखे हैं. प्रिंसिपल्स नहीं है, 4 मोटे मोटे मुद्दे हैं. For us, relationship with United States and its allies is an important threat mitigation strategy. It's an important threat mitigation strategy, both in terms of balance of power in Asia के balance of power के लिए, और also getting latest emerging technologies to build up capacities and capabilities over the next 10 to 15 years to be able to deal with China under all circumstances. So this for us, United States is a most consequential partner, particularly in Indo-Pacific, for countering the balance of power which is being vitiated, which is being spoiled, which is being destroyed by China. Therefore, we have a correlation of interests. Other interests, of course, are markets, technology, etc., etc. But this is the core interest. So we are part of a regional security architecture. Regional security architecture is defined by the Indo-Pacific. Within Indo-Pacific, we have a quadrilateral. So we are member of quadrilateral. We are member, and quadrilateral is not only a military alliance, but we are also within the quadrilateral trying to support rule-based order, build up relationships with all countries in the region. Importantly, इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है, we are along with our other allies and partners जो इंडो पैसिफिक में है, हम रूल बेस्ड ऑर्डर ही नहीं, बट एक जो है स्टेबल एंड सिक्योर रीजन की का बढ़ावा देना चाहते हैं, विच इज नॉट अट्यून टू कोवर्शन बाय चाइना, जिसके ऊपर चीन जो है कोवर्शन नहीं कर सकता. सो द क्वेश्चन टुडे इज दिस,
अगर स्ट्रॉन्ग इंडिया ईस्ट की तरफ है, फिलीपींस और उधर मैंने कहा एक उन्होंने एक दीवार बना रखी है वेस्टर्न अलायंस की, तो चीन जो है कॉन्टिनेंटली जो मर्जी करता मेरे, परंतु उसकी जो मैरीटाइम पावर और इन्फ्लुएंस है, मैरीटाइम ट्रेड जो है और उसके जो एनर्जी सप्लाईज हैं, विल ऑलवेज रिमेन वल्नरेबल टू आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस. This is an important point you have to understand. So this relationship is all about that. Now, that is why when you look at India China relationship इस triangle के अंदर, तो उसके अंदर एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताना चाहता हूं. ये सच है कि हमारे चीन के साथ बाउंड्री के ऊपर लड़ाई है, हमारा विवाद है, बड़ा स्ट्रॉन्ग विवाद है बाउंड्री के ऊपर, और चीन जो है एक तरह से हमारे को एंटेगनाइज कर रहा है और अंदर आने की घुसने की कोशिश कर रहा है. परंतु अगर आप ध्यान से देखें, चीन 4 साल होने लगे हैं, चौथे साल में हम गए हैं. सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई थी हमारे उसके अंदर से, वो हुई थी हमारे सलमान। आयरन रॉड के साथ, और वो जो हनुमान जी के वो थे ना, वो उनके साथ हुई थी. पिछले 4 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर, 3.25 साल के अंदर एक गोली नहीं चली है. ये जो हमारे एनालिस्ट हैं वो जो समझते हैं कि चीन हमारा बहुत ज्यादा दुश्मन है, वो इम्पोर्टेंट दुश्मन है, परंतु चीन ने एस्केलेशन क्यों नहीं करी? 3.25 साल से वहां क्यों बैठा हुआ है? 3 सर्दियां हो गई, उसके हजारों लोग मरते हैं सर्दी में, क्यों क्यों नहीं? वी उसका हमारे को वी हैव टू थिंक थ्रू दिस होल इशू. तो बॉटम लाइन इन दिस होल आर्गुमेंट इज दिस: चीन has two-pronged understanding of India. Prong one, it believes that India is economically, politically, militarily, and strategically becoming quite strong, and if not challenged, and if not kept under continuous pressure, over next 10 to 15 years, India will emerge as a strong power that will make China have to rethink its entire capacities and capabilities, and will have to start thinking of fighting India on a second front. The second thing is strong Indian military capabilities along the line of actual control are the only capability along the Chinese boundary. उसकी बाउंड्री में ये सिंगल कैपेबिलिटी है जो चीन की जमीन के ऊपर कब्जा कर सकती है, जो जिसको हम अपनी जमीन कहते हैं और चीन अपनी जमीन कहता है. अगर इंडिया is the only country that has the capacity and capability to, by taking over its own professed lands, undermines territorial space of China. Everywhere else, China is safe because of waters, but यहाँ पे हमारी टेरिटरी मिलती है और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर पावर जो इंडिया बन रही है, उसके साथ उसको डील करने के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा. तो इसलिए जैसे चीन का मैंने बोला, अमेरिका के साथ कोऑपरेशन, कंटेस्टेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटजी है, उसी तरह इंडिया के साथ भी अभी हमारी कॉन्टेस्ट एंड कोऑपरेशन की नहीं, परंतु कॉन्टेस्ट एंड कंटिन्यू विद ट्रेड स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमारी $1 to 1.5 बिलियन ट्रेड है हमारे साथ. और हमारे को आप जो मर्जी कहें, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो हमारे को चीन के साथ ट्रेड करनी ही पड़ेगी, लाइक चीन को हमारे साथ ट्रेड करनी पड़ेगी. सो द क्वेश्चन बेसिकली इज दिस, दैट देयर इज अ लिमिट to exercise of military power and influence against India by China, and China understands this logic, and therefore the pressure will be maintained. Idea is, and it's a dual action pressure. एक तरफ वो कहते हैं कि हाँ the situation on the boundary is stable,
But we must move forward. We must not get ourselves restricted to boundary issue. We must build up good relationship. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपली ये है कि चीन जो है नहीं चाहता इंडिया अमेरिका का कैंप फॉलोअर बने। वो इस तरह के रिलेशन रखना चाहता है हमारे साथ ताकि वो कहे कि इंडिया फुल फ्लैज जो है अमेरिका का अलाई ना बन पाए। उसका सबसे बड़ा वो है, क्योंकि अगर वो कहता है कि इंडिया अमेरिका का अलाई बन जाता है, उसकी सोच तो कहता है अमेरिकन डिप्लॉयमेंट कम्स अप टू इंडिया, then the whole battle is lost. For the first time, the great superpower and a regional power will join hands together to directly threaten China from both the flanks, from the western flank as well as the eastern flank. So this is the concept. This is the thinking behind the people in Beijing. It is not बाउंड्री के ऊपर 100 2 किलोमीटर ले लेगा। यूज कर दिए, वो कर दिए, नहीं, there's a bigger game plan, and on top of that the market of 1.4 billion dollars, 4 billion जी, people. And please understand, the Indian market is more dynamic than the Chinese market because Chinese के लोग बूढ़े हो रहे हैं, वो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनकी कंजम्पशन पावर नहीं है, और इंडिया की जो है वो कंजम्पशन पावर बढ़ती जा रही है। अगले 15 20 30 साल में लिए हमारे लिए ये बहुत एक गोल्डन पीरियड है। तो वो इस चीज को वो समझते हैं। सो दिस इज व्हाई यू नोटिस दैट in strategic construct of this triangle, while there is a competition and conflict with between US and China, there is contestation with India and attempt to manage relationship and not allow it to escalate beyond a point. escalate. So this is the important part, and this gives India, which is a nodal player in this both the games, a strategic partner in the United States, a partner, a player with whom China has to manage, enough space to exercise its strategic autonomy. Now, अगर आप इस ट्रायंगल में मैं ये समझ जाते हैं, तो ये मैं आपको ये मुद्दा आपको समझाने की कोशिश कर रहा किस तरह से इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इस ट्रायंगल में बनती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Very interesting, sir. So now we look at the India, Russia, China triangle. जी, Now ये ट्रायंगल जो है, मैंने कहा यूरेशिया कॉन्सेप्ट, ये बाय एंड लार्ज जो है ये ट्रायंगल जो है, इसके 2-3 मुद्दे हैं। इंडिया की रशिया रिलेशनशिप, दूसरा है इंडिया की चाइना रिलेशन जिसके अंदर हम काफी बात कर चुके हैं, और दूसरी है रशिया चाइना रिलेशनशिप। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग है। वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर रिलेशनशिप, our defense partnership remains. We have a close to about 56 to 60 delivery, 60% defense dependency on Russia, including spare parts and other elements. Majority of our systems are Russians, and we have a very reasonably good relationship with Russia, but it's becoming more and more transactional. But the fact of the matter is that India and Russia have a good economic and technology partnership. Now the question comes about is this. The problem now coming for this is, how does India-Russia resolve this strategic differences in perceptions? Now what strategic differences in perceptions कहाँ से आ रहे हैं? रशिया चाइना के साथ मिलके इंडो पैसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट को नहीं मानता। रशिया चाइना के साथ मिलके क्वाड्रिलैटरल को नहीं मानता। रशिया चाइना के साथ मिलके जो रीअलाइनमेंट ऑफ पावर हो रही है इंडो पैसिफिक के अंदर, जिसके अंदर अभी आपने देखा था उधर कैंप डेविड में बहुत बड़ी मीटिंग चली थी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड साउथ कोरिया,
and in which subsequently पहले Philippines भी आ गया है. The idea basically is to reoriented strong power structure to against China. उसके अंदर जो है और नेटो भी अपना जो है इन दिस ट्रबल वाटर्स में अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहा है. तो एक तरह का एक एशियन नेटो कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, वो उसके अगेंस्ट है. अभी हाल में क्या हुआ था, दो चीजें इंटरेस्टिंग हुई थी जिसके बारे में आपके जो है ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा. एक ये हुआ था, एक बड़ी एक्सरसाइज हुई है. रशिया और चाइना ने बहुत बड़ी एक्सरसाइज करी, जिसके अंदर ट्रिपल ऑफ बॉम्बर्स, स्ट्रेटेजिक प्लेन्स, सबमरीन्स एंड large number of 31 odd ships took part. And that was done in the East China and Yellow China Sea along the Taiwan, Japan sea borders. इसके अंदर जो है नॉर्थ कोरिया ने भी हिस्सा लिया. तो आइडिया ये था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज कहते हैं कि वी विल कम टुगेदर टू फाइट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ताइवान, ये उनको बताना चाहते थे. द होल आइडिया अंडर फॉर दिस एक्सरसाइज वाज टू से दैट यू आल्सो फेस अ थ्रेट from this combined alliance system of Russia, China, and North Korea to your flanks, that includes Japan and South Korea. So do not think that you can exercise this power and influence without any degree of threat. So this is one. और दूसरा क्या हुआ, मोस्ट इंटरेस्टिंग हुआ पिछले महीने कि एल्यूशन आइलैंड्स हैं विच इज क्लोज टू दी अलास्का, वहां पे इन्होंने जो है अपने शिप्स भेज दिए, रशिया और चाइना ने. आग लगा के आगे. वो एक तरह से आग लगी. आइडिया वाज वेरी सिंपल बॉस. वो कहता है कि यार अगर आप हमारे को यहाँ तंग कर सकते हो तो हम जो है आपका भी घर जो है, आपके भी जो पिछवाड़ा है उसके अंदर भी काफी वो है, स्ट्रॉ डोर्स है, उसके अंदर भी हम कुछ आग लगा सकते हैं. तो ये न मत समझिए कि कॉन्टिनेंटल यूएस. तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिस फर्स्ट टाइम है कि कॉन्टिनेंटल यूएस डायरेक्टली अंडर थ्रेट आ रहा है. एंड दिस इज कमिंग अप. एंड थोड़ी देर के बाद, अगर 5-10 साल के बाद, 5 साल के अंदर आप अगर अलास्का रूट खुल गया तो और भी आर्कटिक रूट खुल गया तो और भी समस्या पैदा होने वाली है. तो मैंने ये ज्यादा व्याख्यान इसलिए दिया और रशिया चाइना रिलेशनशिप का है, और ये बढ़ती हुई रिलेशनशिप है कि इसके अंदर जो है इंडिया को मैनेजमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम है. रशिया इंडिया का साथ देगा, परंतु रशिया की जो है लिमिट जो है विज़-वी चाइना साथ देने की कम हो जाएगी इन परसेंटेज टर्म्स. Russia will support India only up to an extent vis-a-vis China, and that is why if you read all the statements emerging out of the Russian foreign minister, mostly the foreign minister, they basically indicate that India and China should resolve their issues bilaterally in give and take fashion, and etc etc etc. सो यहाँ पे मैंने कहा था कि कॉन्ट्रडिक्शंस आ सकती हैं, बिकॉज गेम इन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के अंदर ये नहीं है कि सारे पलड़े आपकी साइड में हो. ये जो पलड़ा है हमारे को मैनेज करना पड़ेगा. हाउ डू वी मैनेज आवर रिलेशनशिप विद रशिया सो दैट रशिया चाइना एक्सेस डज नॉट बिकम एंटी इंडिया और डज नॉट इम्पैक्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. So this is an important aspect that we need to understand. So this is where I'll shift to the next slide. ये आप सब जानते हो, इंडिया पाकिस्तान चाइना का जो ट्रायंगल है, ये एक जो है चाइना पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. वो उनके CPC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, ग्वादर पोर्ट बन रही है, एक तरह से एक वासल स्टेट बन गया है. उनका एक जो है
उनका एक बिल्कुल अंडर कमांड स्टेट बन गई है बिल्कुल। और हमारा जो चाइना इंडिया मैनेजमेंट हम करते हैं, और साथ में हमारा इंडिया पाकिस्तान है की प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हमारे को एट स्ट्रेटेजिक लेवल हमें चाइना को मैनेज एंड कंस्ट्रेन करना है, उस तरह जो है पाकिस्तान को चीन जो है इस्तेमाल कर सकता है हमारे अगेंस्ट। इसलिए वी हैव टू सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान, विच वी आई ट्राई टू डू इट ड्यूरिंग माय ट्रैक टू डायलॉग्स विद पाकिस्तान, that to say that please do not think that you can use the Chinese card. We have adequate military capacity and a capability to deal with you under all circumstances. Please don't live under illusions. You are a failed state. You are economically failed state, and you have no capacity or capability. In fact, what we are learning is there is a sense of delusion emerging between the Pakistani military. परंतु बात ये नहीं है कि पाकिस्तानी मिलिट्री क्या करेगा। अभी 10 साल की उनकी एनिवर्सरी हुई है चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। उस दौरान चाइना अभी क्या पुश कर रहा है कि चाइना एक जो है पाकिस्तान को फॉरवर्ड बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और ग्वादार के और मकरान कोस्ट जो है उसके ऊपर वो अपना एक नेवल एसेट्स और जो है और नेवल फैसिलिटीज बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान को वो एक तरह का एक स्ट्रॉन्ग बेस जहाँ से वो ऑपरेट कर सके बोथ इन वेस्ट एशिया एंड इन ईस्ट एशिया, वो बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज एन एरिया विच वेयर वी हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ। दूसरी प्रॉब्लम हमारी आती है कि पाकिस्तान जो है because of its nuclear weapons remains relevant to the West. Because of the developments in Afghanistan and the rise of the radical Islamization, West has to continuously engage with Pakistan. And fourth most important part ये है कि the पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो है वो बड़े अरसों से सीआईए का एक हिस्सा बनी हुई है, और वो उनको वो चीज़ें फीड करते हैं जो वो उनको कहीं और से नहीं मिल सकती, बोथ रिगार्डिंग रेडिकल इस्लामाइजेशन इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन चाइना। जी So this is this is a sort of a triangle which we have to manage. We have managed it well. We have managed it reasonably with a great degree of credibility. परंतु दिस ट्रायंगल के ऊपर हमारा जो है तवज्जो हमें रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन हमारी इंडिया की यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है, कोलैटरल बढ़ती है। एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी एंड आसियान जो है एक हमारा पिलर है जो हमारे जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंध बनाने के लिए। इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया हैज प्रपोज्ड अ पावर ग्रिड बिटवीन इंडिया एंड आसियान which will provide electric power right up to Indonesia and up to Cambodia. कंबोडिया इसके दो ग्रिड के दो सेंटर पॉइंट्स होंगे। एक ग्रिड का सेंटर पॉइंट होगा म्यांमार से एंड थाईलैंड, एंड द सेकंड विल बी अंडमान निकोबार के उस तरफ से देयर विल बी अंडरग्राउंड केबल्स व्हिच विल गो टू इंडोनेशिया। So this is an important part. We are upgrading our investments in ASEAN. ASEAN is as a center focal point for our regional policy. Our relationship with all ASEAN countries is very good. And after this map controversy, जिसके अंदर आपने देखा होगा वियतनाम और म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया और इंडोनेशिया तीनों ने अपनी ऑब्जेक्शन रेज करी हैं चीन के साथ, and China is not resolving the South China Sea problem, code of conduct. So the whole issue is becoming a mess, and there is a greater degree of reliance in ASEAN to depend on India, and India is playing its policy cards very well by building up strong partnership with ASEAN, particularly with
three countries: Vietnam, Indonesia, Singapore, and now we are focusing on Malaysia and to some degree on Thailand. I'm not taking Myanmar's name because Myanmar is an area which is part and parcel of our interest and will come more under a neighborhood policy. So then we are ब्रिक्स मैंने बात कर चुका हूं आपसे कि ऐसे ब्रिक्स हमारे अब we are very for us the expansion of BRICS is not a big issue, but it's not a big issue because we have very good relationship individually with these countries. But जब ब्रिक्स की बात आती है as a block, then we have some issues, particularly because this block will be controlled by China and Russia. And I told you how China and Russia are improving their partnership. And lastly, neighborhood policy, एक बहुत important part है. हमने काफी देर तक इसको निग्लेक्ट कर रहे थे, जी, परंतु अभी हमने इसको रियलाइज किया है कि हमारे को good relationship with our neighbors, less Pakistan is very important. So हमने $3.5 billion लोन दिया श्रीलंका को, उसकी इकोनॉमी के बड़ा को रिवाइव करने में मदद करी. वी आर गुड पार्टनरशिप विद बांग्लादेश. बांग्लादेश के अंदर हमारे को फायदा ये है कि चाइना के प्रोजेक्ट्स जो हैं इतने अच्छी तरह से नहीं चल रहे, हमारे को एक मौका मिल रहा है दोबारा अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ बढ़ावा देने का, तो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं. तीसरा ये है कि नेपाली भी को भी थोड़ी अकल आ रही है कि ज़्यादा चीन के ऊपर डिपेंड करने से उनका ही नुकसान होगा. और जो है सो बाय एंड लार्ज जो है वेस्ट एशिया सॉरी साउथ एशिया लेस पाकिस्तान they are realizing, and India is also now investing in this partnership. The on the West Asia ITU2 is a basically an economic partnership, but the fact that we have a comprehensive economic partnership with UAE, that we have good relationship with Kingdom of Saudi Arabia, where as I speak, a biggest exercise of the region is taking place, and India has sent its the largest contingent, including C-130s and our frontline aircraft, including military as well as the naval component. So we are going all out to engage with the region and to build up relationship. Our partnership with Iran is also of high degree on two grounds. One is on Char Pahar and North South Trade Corridor. So अगर आप सब चीज में देखें, India is now trying to build up through this partnership relationship its influence to act in a manner that India's interests are foremost and India's interests are satisfied. So, and last point is Global South. One of the most one of the crowning issues of our Prime Minister's entire thinking during the G20 summit, which is going to take place next 2 3 days, is how to revitalize Global South. जी. So this is all I had to say, sir. If I'm sure your people who are listening on will have a lot of questions. Oh yeah, there are loads of questions, sir. I have identified quite a bit. We have a couple of Chinese friends also here, so Okay. that always happens. I attract it, sir. Wherever I go, वो पीछे पीछे आ जाते हैं, तो उसका कुछ कर नहीं सकते. But in anyways, you know, I want to say one thing, sir. But before I get into the questions, एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो हमको आज दिख रहा है in terms of strategic autonomy, हमने अपना रास्ता खुद चुना है, ना कि चुना है, और आज हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि साहब ये हमारा रास्ता है और हमको पूरा राइट है उसके लिए. एंड मेरे को ये चीज दिखता है, सर, हमको देख देख के काफी और देश भी ये चीज बोलनी शुरू हो गए हैं. अब या वो डायरेक्ट हमारे से इन्फ्लुएंस है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या करते हैं, मुझे पता नहीं. बट ये रशिया यूक्रेन वॉर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था. उससे पहले वेस्ट को कोई आंखें नहीं दिखाता था. हमने शुरू करा, उसके बाद काफी लोगों ने वही चीज को दोबारा दोबारा एक्सप्रेस करना शुरू करा. यहाँ तक कि आज विक्टर ओबान जो प्राइम मिनिस्टर हैं हंगरी के, Very good. वो तो वो तो लिटरली अभी तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं. तो डू यू थिंक इंडिया ने एक कोई
did India play a leadership role to say, okay, we can still deal with this mess. We don't need to cow down. Uh, Absolutely correct. India has become a figurehead or a central point, focal point for large number of countries to follow our lead. And the countries which I'm looking at are, for example, Indonesia. Indonesia, till yesterday, was a very, very, it was subdued power, largest country in ASEAN, but was never willing to exercise its influence. Now, Indonesia, we see, is fighting for its rights. Indonesia is making its own strategic choices. It is exploiting its resources. It is trying to capitalize on its investment potential and building up relationship with everybody in interest of a larger Indonesian format interest rather than. Then we are seeing the other thing happening in now Saudi Arabia. Ji. Saudi Arabia is another country which is exercising. It's not that Saudi Arabia does not have a alliance with or a partnership with United States. No, it has. But it says I'll maximize my choices. And my maximizing of my choices mean is that I'll on one hand try and hold a conference of 40 countries to resolve Ukraine conflict. But at the same time, I'll also work with the Chinese for infrastructure Whatever I want. investment and with Infrastructure Russia, investment. whatever. So, so the choice today is that till yesterday you had to be either in block A or block B और नॉन अलाइंड नॉन अलाइनमेंट मतलब कि आप एक बैगर हो भूखे नंगे हो ना वो आपको कोई दे रहा है ना ये दे रहा है नाउ you are manipulating geopolitical space for your interests. You are Most important. manipulating and the lead for this ability to leverage geopolitical space to advancing your interests has been given by India. And I think India should take pride in it. And this is something which a lot of my countrymen unfortunately don't understand or subscribe to it. Is that this is the fact? We may not have the heft that the Americans have. It's not the question of numbers that you have. भाई आप करोड़पति हो तो ड्रिंक तो दो ही पी सकते हो ना शाम को Timing भी होता है हाँ. Actually, that's a good example. I mean you can have as much money as you want, but how much can you utilize and how Yeah, much you yeah. utilize for what purpose? And at the end of the day, what we have seen is that ability to manage intelligently your relationships and leverage your interests provides you much greater advantage than the totality of power. The totality of power does not help you in everything because leveraging and ability to leverage that power is remains that much and limited. Let's get into some questions, guys. सबसे पहले तो यार लाइक शाइक तो दबाना ही दबाना है. About 350 people are watching us right now. तो यार लाइक शाइक तो दबा दो सारे लोग ताकि ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंचे. 220 लाइक्स हैं. वेरी नाइस यार. नॉट बैड. आजकल यू गाइस आर नॉट लेटिंग मी सेट अ टारगेट. आप 200 पहले ही क्रॉस कर जाते हो. सो 300 ले जाएं प्लीज. Let's please help me out by pushing the likes because it's very very critical. Um, फॉर देखिए ऐसा है हमको थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में देखना पड़ेगा. पूरी जो दुनिया है आज, आप अपने देश के लिए प्राउड है. मैं भी उससे ज़्यादा प्राउड हूँ. तभी मैं लिटरली दिन रात काम करता हूँ इन चीज़ों को बताने के लिए, आपसे इंटरेक्ट करने के लिए. बट वी हैव टू सी द ग्लोबल ऑर्डर कहाँ है और हम किस तरह से उसके अंदर से अपनी जगह निकाल सकते हैं. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक सर ने जो बताया है हमको स्पेसिफिक्स में बताया है. बट सर वुड यू एग्री ये जिस्ट बड़ा अच्छा है कि भाई जो मर्जी सिचुएशन हो हमको अपना रास्ता निकालना है. अब Yes, चाहे वो इस तरफ से निकालें, चाहे वो उस तरफ से निकालें या दोनों का हाथ पकड़ के निकालें, वो अलग चीज़ है. दैट इज़ समथिंग we दैट must work towards our own strategic interests. जी, जी, एब्सोल्युटली. सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस गाइस. आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल.
Importantly, spread the word. हम लोग we are at about 48,000 subscribers. आज ही सुबह खत्म हुआ है. 48,000, 2,000 और चाहिए for the big first bracket of 50,000. So please help me out doing that. And you can also contribute towards the Dev Talks efforts with the QR code right above here, or become a member, or send us a super sticker, super chat. As a matter of fact, there are two new members that have joined in. Mr. Lakshmana Kumar, thank you so much, and Amrit Kal Sahab, thank you so much for joining in. Uh, Thank you so much. Uh, बचपन की हरकतें. This is amazing name. Thank you so much for your contribution. He says, Namaste, Aadi ji and Sahgal sir. I believe deep state Pakistani army and CCP are together against Hindus or India. US is on nobody's side. Your thoughts? US is on nobody's side. Uh, Look, it's like this, that what you say is generally correct. I mean, we understand that. When you are playing a big game, or when you go outside, even on the road, there are big trucks there, small trucks there. There are all kinds of traffic is there. So we understand there is a deep state. We understand there is a Pakistani army. We understand Chinese Communist Party and Pakistani army are hand in hand on stage. But it is like I said, and United States is nobody inside. Of course, the power interests matter. But again, like I try to explain in my discourse today, is that India has the capacity to leverage these things to its advantage. And India has already set its limits. Let's take, for example, Pakistan. Pakistan does not have the capacity to hurt India beyond, little nitpicks here and there. I mean, that's something which we can manage. We have already discussed that the Chinese have the capacities, but Chinese will not have the intent for a much larger reason, which we discussed. United States has to have a certain degree of good strategic partnership with us, and that's why on the 7th uh, of this month, the Biden is going in for a second meeting with Prime Minister Modi in a month or 3 months' time. So please understand that it's not they are stupid enough to. It is in the growing strategic partnership with the United States as provides us the leverage with the Chinese. Our capacities and capabilities provide us leverage with Pakistan, and therefore, while these challenges remain, and you are in any environment, there are challenges, but we have the capacity to manage them, and we need to be circumspect in managing them, and also ensure that we continue with our economic, political, and technological growth, along with building our military capacities and capabilities to ensure that India is always ready to stand up to these challenges, which will always come up there. It's not not an issue, but we are building up the thing, and we have a political resolve at this point in time, and I believe it will be there in the future as well to deal with these challenges. Interesting. Let's go, sir. Next one. This is probably a comment. Sir, strategic autonomy can only be achieved by being self-reliant and in-house development and manufacturing of weapons, platforms, and its subsystems. I think that's It's a very good point. You're absolutely correct. I mean, that's why I continue to maintain that we have to build up our own capacities and capabilities. But when we are talking about manufacturing weapon system and platforms, I just want to highlight this issue. We keep talking about this. We have to have internal capabilities, etc. Developing advanced weapon systems, A, is cost prohibitive, and second thing is it requires economies of scale. G. You cannot put up a plant to make 100 aircrafts with which you can build in 10 years, a big factory costing what you say 40,000, 20,000 crores, etc. You also need to have an export market. So when we are talking about intrinsic capabilities, we have to be very circumspect what we need to produce for our own self, what we have to produce to become a global exporter. Now, global exporter has its own large advantage because when you sell weapon systems to different countries,
you always also create dependencies. And strategic So, boundaries, yes. and strategic boundaries. So this is an important aspect. I just want you to understand this, because it's not a question of making G 414 आ गया तो 50 इंजन बना के हम बैठ गए. वो why would he bring in his equipment here to make 20 engines or 40 engines or 80 engines here? Along with development of 80 engines is associated R&D, technology upgradation. We have to think through this whole problem and say, okay, Ecosystem, हाँ, पूरा what is the ecosystem kind होगा of ना सर. ecosystem? How, then we have to now start peddling those aircraft to say, okay, I'll sell it to Southeast Asia, I'll sell it to West Asia, I'll sell it here, I'll sell it there. Those people who want this equipment. So, so we need to be circumspect on those issues. Exactly. Otherwise, you want 3 squadrons, 4 squadrons, buy the thing, yeah. So our Sahi Sab says, seems Russia is also not going to sign G20 summit. They want an anti-Ukrainian statement to be added along with China, virtually blocking every item in the agenda. Diplomacy. Uh, I think there'll be some give and take, but yeah, but that's okay. But the question is not that. The question is India will then expose these players who are championing the global south by blocking the statement, by saying that at one level you want to be a champion of the global south, on the other you are acting in the detrimental interest of the global south, because G20 is not a strategic Grouping. gathering. It's an economic gathering and developmental gathering. Are you looking at what are you looking at? You are looking at developmental issues. You want to improve the healthcare. You want to improve the supply chains for essential items. You want to bring in industry investments into those countries which are in a less developed state. You, all related to what is called in the Millennium Development Goals. So if you are not going to support those, and you want to based on some exterior agenda of having a scrap between West and these two powers, these two blocks, you want to block the developmental agenda of the world, it's up to you. And India, I'm sure, will take them out. Will call them out and say, you cannot play it both ways, and you have to take a call. And I'm sure at the last moment something will happen. Some statement will be created that will satisfy all parties. China's economy is going down, so to divert attention of the public, CCP can do military adventures in Leh and Arunachal area. This is something which everybody fears. I just told you not possible. I mean, it's possible, but it'll be Possible, but it's not sensible. it's not sensible, and it will be it India has the capacity of QQQ operations. Please understand that when China uses 1962 type of force against us, it will not stop at one hill or two hill. It will escalate into depth areas. Now we have the capacity to hit them in depth areas. I just finished a big paper on India's missile program, India's missile force, its implications, how it should be constructed, etc., etc. It is. We have to be. Chinese realize this, sir. You also have to realize it's not going to be a war of one picket or two pickets on the infantry war. No, it's going to be bought on the at the tactical level. It will be war at the operational level. It will be war at the strategic level. Does China have the stomach to fight that kind of a war and come out in stalemate? What is it at the end of it? What is it going to achieve? Two hills, and what for? What are the strategic? Please understand that it's not going to be Arunachal Pradesh or this issue.
He knows that we are reasonably strong now. He knows that he can, yes, take one hill for a short point time, but India will attack. It will not stop there. So, what is it at the end of it he's trying to gain? That is the most important question you ask yourself. I don't think anything sensible will he gain out of Otherwise, he this. would have done it और by now. 3.25 साल से बैठा हुआ है ना, क्या बैठा कर रहा है? तो ये अगर वो कर सकता तो कर देना था। और उसके बाद True. हमने कैलाश का कैप्चर किया ना, स्टेज देम आउट, वी कैन डू इट अगेन, ही विल रियलाइज इट। So I don't think you should worry on that issue. But what is sad is that the political mind of China is getting fixated on issues of what I feel there's a sense of paranoia that is setting in, man, that the West, along with India, is somehow trying to isolate them, and that isolationist mindset of Mr. Xi is pushing him into direction where he's becoming more and more antagonistic, not only with Americans but with us also, and doing the stupid thing by not coming here, etc., and trying to send a message. I don't know what message he's trying to send. The only message he's trying to send is that I have want to kill G20 as an institution by upgrading it to in the BRICS. He's also sending a message that yes, I can consolidate it, but everybody knows this is a fractious organization, and eventually, when it tries to consolidate that organization, you realize how many different directions it will move in, and also in the SEO. SEO, his agenda is not being followed completely. And SEO, in fact, is an area where India and Russia see much more closely than they see Yeah. with China. So it's a, I do not know what their calculations are. I'm sure they have calculations, but in my mind, those calculations don't seem to be extremely fruitful for the Chinese. Sandeep ji says, whereas the speaker think Iran comes in historically a bit like China, it has seen himself as a world power in the making. China is a West Asian swing power. Oh, sorry, Iran. Iran is becoming part of an axis with Russia and China. Iran is also, if Iran Saudi reconciliation takes place, it will also mean a much greater consolidation. But I do not think, because of the religious underground, it can go beyond a particular point. But it will certainly be an important development. And Iran is a country which India has always had good relationship, and we need to build good relationship. And that's Yeah. why the reason I think must have saw how Prime Minister had a separate meeting with Iranian President Rafsanjani, and we want to have good relationship and build up to Chabahar and North-South trade corridor, which is one wing of which is also being newly constructed to go to Azerbaijan, Hmm. so that we want to get into Europe from there. So it's a Iran is an important state and also provides. I do not think the way things are happening between Afghanistan and Pakistan, uh, that corridor is going to go very far. So Charbahar and INSTC could become a very important and a lucrative alternative route for Central Asia. Uh, and therefore, our investments in Charbahar have, have a great degree of salience. Ji. Ming Wu, he is a friend in quotes from China. He says, I honestly think India chose a wrong way to go. By the way, this person 2 days ago was saying that Chinese claim on Arunachal Pradesh is useless, is pointless, it doesn't make any sense. So it's probably a sensible Chinese. What would you like to say to him? Either he's trying to ingratiate within us by being nice, or So I think I don't understand what do you mean by honestly think India chose the wrong way to go. Are you because referring to in the a minds of partnership with the Chinese, United States? yeah, Are you talking about a partnership with the United States? Look, India has a partnership with everybody. everybody. We want to have a partnership with you, but the only problem is CCP. boundary issue. You have resolved with everybody, but you have not resolved with just two of us and Bhutan.
That makes no sense. I mean, you cannot continue to play this game forever. Let's solve the boundary issue. Let's become good neighbors, and there will be much more peace and tranquility in Asia. Asia needs development. Asia needs growth. Asia needs much more degree of connectivity. If we can do that, nothing like that. That doesn't. This has got nothing to do with the relationship with the United States. Our relationship with the United States is in a different plane. But Yeah. as far as you and I are concerned, we need to build up our relationship together. We are not a challenge to you, nor do we expect you to be a challenge to us. So we can be a good partners in Asia and work together for the betterment of the region, and use our capacities and capabilities. As also, China can help India in development. You have Both ways, you sir. have It can be both ways. I mean, the it's a Chinese aren't win-win gaining by. situation. It's a win-win situation for you, but you want to keep fighting for some old boulder or a rock on the line of actual control, for which I don't know if you have any idea what the hell it means to be. I mean, what that line on the ground is. It means, I mean, sir, the call has to be taken by you. We are ready. And the worst part is that it's actually harming China more than anything else. They've woken up a sleeping giant, which is basically countering it at every nook and corner. And now they're crying, "Why are you countering us? We are neighbors and we are good. We are supposed to be good friends." Absolutely Are correct. why? Absolutely. Whose fault is it? Yours. So last two, sir. Dictator 12321. Were you Dictator 666 before you changed your name? But anyways, Brigadier, as you part of track two, how are Indian defense export regarded in the global south? We're making good efforts, sir. We sold some equipment to Egypt. We are selling some equipment to UAE. Our equipment is improving by the day, and you will very soon see India becoming a very important export market. We should, I think, reach about a 1 billion or $1.5 billion figure in next couple of years. So it's not part of track two. Track two, we resolve differences. We don't sell exports, but the question basically is that India, through its Autonomy program, is trying. And if anybody has any doubts about India's technological capabilities, we have just shown by two flights. One is by Chandrayaan, and other one by our lunar explorer, that we Aryan. have the capacity. Solar Explorer, sir. Please understand this. Aditya Every 1. PSLV can be converted into an ICBM. Yeah. Please remember that. So we The don't think. Chinese need to get something, sorry, but Chinese need to get something in their mind that it's not us who's the problem, you know? No, we are not. It's not us. For so many years, we've tried and tried and tried and talking to you and trying to figure something out. Prime Minister tried it again, and then you come out and release a map and piss off another 1.4 billion people, plus the entire of ASEAN and probably half of Russia. That's not us. Yeah. That's just you. Russians are being nice right now, not saying anything. But trust you me, if the Russians were in their form, you would have had a big trouble. Russians are very concerned about Chinese action in Russian Far Yeah. East, I, I Vladivostok had and this things I like had this encounter, yes, sir. I must tell you this. I had this encounter with this some think tanker from Moscow yesterday. So I said, he said, "Oh, we've denied there's nothing and all that stuff." I said, "Buddy, the Russians aren't stupid. Okay, you might be believing what your foreign ministry is saying, but the Russian establishment is not stupid. That this is the case. The Chinese have been claiming Vladivostok. As a matter of fact, the Chinese claim the entire of Siberia. तो जरा आराम से तुम जरा सोच लो क्या बोल रहे हो, but in any case that's up to you. uh, JB, thank you so much for your contribution, sir. I think we are done with most of the comments. We are at about 1 hour 30 minutes. I think it's time to bring this podcast to a close. Thank you so much, sir. This has been a serious learning experience. I think guys are going to have a lot to think about when we get out of this, because at the end of it, India, Bharat has taken काफी सारे steps that we need to interpret, we need to understand, and probably connect the dots, which is what I think DevTalks as a platform has tried to do for you.
Sir has Yes. actually put in a lot of effort to bring in certain aspects which will help us understand this concept a little better. Sir, thank you so much for that. Thank you, And sir. Thank you for having me on the show. I enjoyed guys, being before there. we sign off, like zarur karega and please spread the word. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.